Hello everyone, welcome back to another exciting and learning session by the Powerhouse Ideas. I hope all of you are liking this series and these series are adding some value into your trading life. Okay, if you are liking this series, I request all of you to kindly tell me in comments or like this video so that I can understand that you are gaining some value out of this series. So quickly, let us start the analysis and see what can happen tomorrow. But before that, let us see that what market is doing right now and what we discussed in the previous video. For that, I'll be taking you firstly to the daily time frame. On the daily time frame, you can see that the market is extremely bullish on intraday basis. Intraday basis the market बहुत bullish है इस समय. And अगर आप individual last three candles को consider करो, then individual last three candles are creating, sorry, not LH, higher high and higher low pattern. कैसे मैं आपको बताता हूँ. The low of this candle, daily candle was over here and the high was this. Then the next day the more high low was created and a more higher high was created. And today even the market created a higher low and a higher high. So individual candle basis also market is creating higher high and higher low just like this. So it's a bullish pattern. Okay, even on daily. So market is extremely bullish. But we as intraday traders don't care, or we as option traders don't care where the market goes. We need to identify the trend and stick with the trend. Now let us see what we discussed in the previous video and what can be the probable movement. As I said in the previous video when we were discussing the hourly time frame, I clearly said that my bias for intraday basis is bullish. I also said that this high formed over here, sorry, this low formed over here is something different from the previous three lows. Market was initially forming a range over here, and every time the market used to touch the bottom of the range, but this time the market did not touch the bottom of the range and the result is in front of you. Okay, so market went extremely bullish. This was the first sign which we identified, and I don't think so this any other channel, any other you can say YouTube you follow have identified in this manner. Okay, but we identified the price action and I shared with you exactly the same thing. Now let us see what can happen tomorrow. But before that, one more important thing. In the previous video, I said that if market opens gap up above 16,400, that is above this level. Wait a second guys. Yeah, I clearly said that if market opens gap up above 16,400, I'll be waiting for the market to retest this area and show me some bullish signal. But the market did not retest it and I did not took any trade. This is the thing you also need to develop. It's not important that you trade daily. What is important is you save your capital daily basis. Okay, so I didn't took any trade because the market did not behave as per my plan or as per my setup. So now let us see what can happen tomorrow. For tomorrow, let us identify the key levels first so that we can identify what can happen tomorrow and what can be the key level of reactions tomorrow. So the levels remain almost the same. 16,600 seems to be a very important level, 16,660, because this level was earlier working as a resistance, sorry, support. Now it's working as a resistance. Another level which can be marked on the upside is 16,800 ka level. These are the two resistances on the upside. On the downside, some of the immediate supports which you should also mark is, first support is 16,500 ka level, because this level behaved as a support and is also a gap support as per the today price action. So 16,500 happens to be an important level, and as I already showed you on the daily time frame, it has created a higher low. On daily time frame, market is creating a pattern like this. Every time the next daily candle is creating a higher low, so it is also technically the previous daily higher low of the short uptrend which has started. Okay, so this level also seems to be very important. The next important level is 16,400 ka level, which we identified in the previous video and the previous session, which will now work as a support. We will be considering this level as a support, which was earlier a resistance. Okay, next important level on the downside is 16,240. The reasons already explained in the previous video. You can delete all the other levels which we created downside. Okay, these are not required right now. So let us remove some of the noise from the chart
because these are not required for tomorrow's trading at least. So these are only 4 levels or 5 levels. 16,800 is an important level also. These are only 5 levels which we are taking as a trading setup for tomorrow. Now let us see what can happen tomorrow. For that, let us quickly move to the 5 minutes time frame. Wait a second, guys. Yeah. As you can see, the market is already overstretched and our bias still remains bullish. ठीक है, अभी तक our bias still remain bullish. No one should think in a manner that market has already इतना भाग चुका है, अब तो नीचे आएगा, अब तो पीई लेनी है. ऐसा नहीं करना. आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है. जो ट्रेंड है वो उसी के साथ ट्रेड करेंगे. अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती भी है तो मैं आपको एक लेवल बताऊंगा जिसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो ही अपने पीई का सोचना है, नहीं तो आपने नहीं सोचना है. ठीक है, तो मार्केट जितनी मर्जी गिर जाए, एक पर्टिकुलर लेवल जो मैं बताऊंगा उसके नीचे हम सोचेंगे पीई का, नहीं तो हम नहीं सोचेंगे. तो मार्केट का बायस अभी भी हमारा रहता है बुलिश. नाउ लेट अस सी व्हाट कैन हैपन टुमारो. इफ मार्केट ओपन फ्लैट टुमारो, अगर मार्केट इसी एरिया में कहीं खुलती है एंड स्टार्ट मूविंग अप एंड ब्रेक्स अबव द टुडेज हाई दैट इज 16,700 का लेवल, देन वन रिस्की ट्रेड, आई एम रिपीटिंग द वर्ड रिस्की ट्रेड, कैन बी टेकन because the market is overstretched, it can pull back. ठीक है, तो एक रिस्की ट्रेड रहेगी. मैं सिर्फ एक ही लॉट लेना पसंद करूंगा फॉर टारगेट ऑफ 16,800 अगर मार्केट फ्लैट खुल के आज के हाई को ब्रेक करती है. अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आना शुरू करती है तो मैं पीई की ट्रेड में नहीं बैठूंगा, बिकॉज अभी तक मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है इंट्राडे बेसिस. ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आना शुरू करती है एंड हमें मिलती है कहीं 16,500, जो हमने आज नहीं सपोर्ट आइडेंटिफाई की, उस लेवल पर, तो आई विल वेट फॉर अ कंसोलिडेशन और क्रिएशन ऑफ सम बुलिश पैटर्न लाइक डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम. कुछ इस तरह के पैटर्न अगर मुझे बनते हुए दिखेंगे देन आई विल बी गोइंग फॉर अ सीई ट्रेड. लेकिन कंसोलिडेशन या एटलीस्ट डबल बॉटम बनने के बाद एटलीस्ट 5 मिनट पे. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेना पसंद करूंगा. पहला टारगेट मेरा ये रहेगा, और अगर मार्केट कल बाय चांस 16,700 को ब्रेक कर जाती है देन माय टारगेट विल शिफ्ट टू 16,800. ये तो बात हुई अगर मार्केट फ्लैट खुलती है. अगर मार्केट खुलती है गैप अप तो मैं कुछ भी लेना पसंद नहीं करूंगा, बिकॉज गैप अप के चक्कर में मार्केट ऑलरेडी ओवरस्ट्रेस्ड है एंड गैप अप के चक्कर में मार्केट फिर से ऊपर खुल के ऊपर चली जाती है बिना रीटेस्ट किए, तो मैं कुछ भी लेना पसंद नहीं करूंगा. लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुलती है समवेयर अबव दिस हाई एंड कम्स डाउन, तो वो किस लेवल पे अब कल जाके कंसोलिडेट करेगी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवरस्ट्रेच्ड है. तो आपको ये प्रो टिप देता हूँ, इफ द मार्केट ओपन्स गैप अप समवेयर ओवर हियर एंड स्टार्ट कमिंग डाउन, तो इमीडिएटली हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन पे एंट्री मत लेना. वेट फॉर द मार्केट टू कम डाउन एंड कंसोलिडेट एट सम लेवल. इट कैन बी ईदर दिस लेवल or either this level. ठीक है, wait for the market to consolidate at either level and then give you some kind of bullish signal. ठीक है, तो गैप अप के केसेस में थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाएगा. अगर यहाँ से मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाती है तो इट कैन बी अ रिस्की ट्रेड. नाउ व्हाट इफ मार्केट ओपन्स गैप डाउन? जब तक मार्केट 16,500 के आसपास रहती है, 16,500 के आसपास रहती है जब तक मार्केट, तब तक आप एक सीई की पोजीशन ही ढूंढोगे. मीन्स अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है यहाँ पर एंड कंसोलिडेट करके ऊपर जाना शुरू करती है देन हम सीई की पोजीशन ही देखेंगे. ठीक है, अब अगर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद 16,500 के नीचे चली जाती है, 16,500 के नीचे चली जाती है, देन टेक्निकली जो हमने डेली पे एक पैटर्न देखा था कुछ इस तरह का, ठीक है, इस तरह कुछ पैटर्न देखा था, वो टेक्निकली प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर देगा, जो कि ये है इस केस में. देन हम एक पीई के बारे में सोच सकते हैं. अगर ये पिछले डे के लो को ब्रेक करती है मार्केट, तब हम एक छोटे पीई के बारे में सोच सकते हैं विद द इनिशियल टारगेट ऑफ 16,400 ओनली. So this was a short analysis of Nifty 50. What can be the probable movement tomorrow? Before closing the video, let us see what option chain has to tell us. So we are quickly moving to the option chain analysis. On the option chain, you can see what is the strongest support. अभी तक आप लोगों को ये पता चल चुका होगा that the put side works as a support. ये जो right side है, this works as a support and the call side works as a resistance. So what is the immediate strong support?
and there is no surprise, the 16,500 is the immediate strong support, सबसे पास वाली सबसे बड़ी है। उसके बाद 16,300 है जो हमने ऑलरेडी 16,240 का लेवल मार्क किया है, ठीक है। तो 16,500 जो आज के दिन का लो है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो जो हमने प्राइस एक्शन की अभी स्टडी की, डेटा में भी हमें वही देखने को मिला है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द रेजिस्टेंस, हमारे पास 16,800 भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एंड 16,700 जो आज के दिन का हाई है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सो डेटा से हमें क्या समझ आया कि जो हमने प्राइस एक्शन देखा, डेटा ऑलमोस्ट और यू कैन से 100% मैचेस विद द प्राइस एक्शन विच वी डिसाइड, ठीक है। सो दिस इज वाज जस्ट एन आई ओपनर, बिकॉज सम पीपल थिंक दैट प्राइस एक्शन के साथ सिर्फ ट्रेडिंग नहीं हो सकती, यू नीड टू सी द ऑप्शंस डेटा एज वेल। सो इट्स आई ओपनर फॉर देम ओनली, ठीक है। बाकी ये आज का एनालिसिस था। आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज। इफ यू आर लाइकिंग इट, काइंडली share it in comment that what you are liking, and also provide your feedback that what you want us to include in these videos. I'll see you guys in the next video. Till that time, take care. Bye bye.